ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाबी, हिंदी, उर्दू ਜਾਂ अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ, ਸਭ ਦੀ ਚਾਹਤ। ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਮਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 5879999696 587 999 9696। मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स। ਲੈ ਵੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮਿਲ ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, GFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। GFS immigration for study permit, work permit, sponsorship, LMIA, permanent residency या refugee and appeals. Call 403-436-6000 or 403-406-2004. ट्रक ड्राइवर पढ़ना चाहते हो वो भी फ्री? जी हाँ, प्रोफेशनल क्लास 1 ड्राइवर्स लाइसेंस मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। शानदार मौका हथों ना जान दो। आज ही संपर्क करो लाइट स्पीड ड्राइविंग अकेडमी वाले नाल 403 612 6000 ते ट्रक ड्राइवर दी ट्रेनिंग लो। ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स ਲਈ जॉब ਦਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਕਾ। फ्री लाइसेंस लो, देर ना करो, चुको फोन ते करो टायर 403-612-6000 तो बाकी काम लाइट स्पीड ड्राइविंग अकेडमी वाले नाल। ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਕੋਲ ਹਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਕਲਾਸ 1 ਮੈਂਟ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ 4036126000। सम कंडीशंस अप्लाई। सलाम नमस्ते 𝗃𝗶𝗀𝗧 मैं आपका होस्ट जलाल आपकी खिदमत में हाजिर। आप सब सुन रहे हैं सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन सांझा रेडियो 94.7 FM और जो आप कह सकते हैं कि जो है फॉर्मरली रेडियो सुर संगम। आज यह ट्यूसडे का दिन है तो ट्यूसडे नॉर्मली वी हैव सलाम नमस्ते कैलगरी और हमारे जो है नॉर्मली गेस्ट भी होते हैं यहाँ पर। तो आज का भी यही तो जो आज का शो है वो भी वही हमारे पास जो है गेस्ट आ चुके हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ऑन 94.7 FM और वी आर लाइव ऑन फेसबुक एज वेल। अगर आप फेसबुक पे जाएं सर्च फॉर माय नेम जलाल लाडक और देन यू कैन फाइंड आज की जो लाइव फीड है। नॉर्मली जो है ट्यूसडे को मेरे साथ जो सलमा जी होती है, आज वो नहीं है। इंशाल्लाह शी विल बी बैक इन नेक्स्ट वीक और 2 तो वो फिर हमारे साथ ज्वाइन करेंगी एंड विल कंटिन्यू अवर शो। सबसे पहले कि आज का जो शो है स्पॉन्सर के है रियल्टर आसिम नवीद। इनका कहना है इफ यू बाइंग और सेलिंग कॉल रियल्टर आसिम नवीद। इनका फोन नंबर है 4034042746 4034042746। तो आई थिंक तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक बहुत ही जो अफसोसनाक केस हुआ था कैलगरी में डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें सुबह 8 बजे स्कूल खुलने से पहले कि स्कूल खुलने वाली थी सुबह 8 बजे और एक जो है फीमेल की बॉडी जो है मिली राइट आउटसाइड द स्कूल। आई थिंक के हम ऑफ कोर्स बल्कि सालों से हम ये बात करते आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस की कि हो रहा है कि ऐसा करना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन आई थिंक अगर इफ आई टेक यू बैक एज ऑफ नवंबर 2023 ग्लोबल न्यूज़ का एक जो है सर्वे आया था। अकॉर्डिंग टू दैम अल्बर्टा के जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो फोन कॉल्स हैं इट जम्प्ड very high numbers now, like we are talking in 50,000 plus, which is the highest in Canada. तो ये ऑफ कोर्स इसमें हमारी कम्युनिटी भी आ जाती है जो कि साउथ एशियन कम्युनिटी भी है, बाकी जो कम्युनिटी वो भी इनमें आ जाती है। ओवरऑल नंबर्स आर रियली अप स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक। तो आज जो है मेरे पास 2 गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। विल टॉक अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस, वो अपना किस किस्म के होते हैं। लाइक आई नो वी बी टॉकिंग फॉर लास्ट 30-35 साल 20 साल से हम ये बात करते आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन उसका जो रिजल्ट तो वही का वही है, बल्कि इट्स गेटिंग वर्स नाउ। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक दिस इज वी गोना गो 1 स्टेप फॉरवर्ड नाउ। हमने बहुत बात कर ली, बहुत सुन लिया, बहुत एक दूसरे को हमने बोल दिया कि ऐसा नहीं करो, बहुत हमने रेडियो शोज कर लिया। आई थिंक वी शुड टेक नेक्स्ट स्टेप नाउ कि हमें किस तरह रोकना चाहिए। हमें अभी जो है एक्शन की जरूरत है। बातें हमने बहुत कर ली,
because you know like I said it's getting worse now. तो ये बात करने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी दो गेस्ट हमारे मौजूद हैं हमारी कम्युनिटी से। एक है हमारी हुमैरा फलक जो कि आई थिंक हमारे शो पे पहले भी बहुत बार आ चुकी है और शी इज काइंड ऑफ द सोशल वर्कर बट आल यू नो हम उनसे पूछेंगे कि अभी उनका जो है जो उनका जो इंट्रोडक्शन भी किया है बट आई नो शी इज डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। फिर उनके साथ एक मौजूद है हरप्रीत हंस जी जो कि PCHS कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से यहाँ पर मौजूद है। दे आर डूइंग सो मच वर्क एज वेल इन अवर कम्युनिटी और वो बताएंगे कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है फॉर फ्री। आपने कुछ भी जो पैसा नहीं खर्चना है लेकिन as long as you are safe that's all matters at the end of the day. So first of all my guests Humaira ji and Harpeet ji, thank you so much for coming in. Hi, Assalamu alaikum, hello everyone, and thank you Jalal bhai for having us here today to talk about such an important issue. It is, yes, like it is very very important, no doubt. जैसे आपने कहा we've been talking about it for years. Yes. लेकिन जितना भी बात करें उतना कम है because we are nowhere even close to solving this बिल्कुल, or addressing it. So बिल्कुल. yeah. So why don't we start with your intro like Humaira and Harpeet ji. Like Humaira you can go first. For sure, Hanji. So, मेरा नाम हुमैरा फलक है. I've been working in, I've been living in Calgary for the last 10 years. Basically, I am a community development practitioner or community development worker. I have worked on frontline as well, but right now my work is mostly around policy and systems change. And I am working with Action Dignity on social and economic inclusion as well as other areas, including some of domestic violence and mental health as well. So, which is another like topic, very important topic as well. And I do a lot of research as well. Research as well. Oh, that's good. Awesome. Harpeet ji, aapke liye. Hanji, thank you Jalal ji first of all inviting me here, so giving me the opportunity. So actually I'm a nurse by profession for over 24 years. Wow. So right now I am working with PCHS part-time. I'm a group facilitator. So मैं उनके domestic violence group or women growth circle and mental health group I have been conducted and then I'm just keep doing it, work with them. I think our community definitely will talk about what type of services we provide. So I'm happy to be here and share whatever we have and we provide. Thank you sure. so much. Yeah. So PCH stands for? Punjabi Community Health Services. That's and then we provide services South Asian community में हिंदी उर्दू और पंजाबी में सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. सो वी प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, इंडिविजुअल काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग and family domestic violence cases and also substance abuse addiction, relapse. So there's so many programs that we provide. And we just started a youth counseling program which is starting because of the families or there's so much going on. Children 12 and up, teenagers में बहुत struggle कर रहे हैं, anxiety में, depression में, and witnessing the domestic abuse at home, it's impacting them, it's causing them big trauma. So right now we started that program. So we have a counselor for that too. So people can reach out if they know that their child they see any change in behavior or any type of symptoms they see that they should seek help. So we'll start. Of course, we heard so much about the domestic violence, especially at home. So, what is the domestic violence? अगर इसकी हम जो है definition पूछे, Humaira, what is it? Domestic violence is, I would say, it's a coercive control या एक वो violence जो within a household होता है, within family members. So it could be between intimate relationships like partner, between spouse, between parent-child का भी हो सकता है, grandparents, or within that household, within that domestic arena. So उसको basically आप domestic violence define करते हैं. लेकिन domestic violence की जैसे हमने बहुत बार बोला है और हम शो से पहले भी बात कर रहे थे कि there's so many different kinds of it, right? Most of the time हम लोग जब इस पे बात करने आते हैं, जैसे अब आपने हमें बुलाया है because of this incident that happened where this woman was unfortunately killed. जब physical violence होता है to a level जहाँ पे कोई मारा जाता है, तब हमारी attention इस पे जाती है. But वो violence तो है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी violence है, जैसे emotional abuse है, mental abuse है, verbal abuse है, psychological है, religious है, financial है, there's so many others. उनके impact बहुत ज़्यादा हैं. Actually emotional और mental और verbal का तो impact बहुत long lasting भी है. Physical, it gets, you get done with it, आपके scars heal कर सकते हैं.
बट उसके बहुत ज़्यादा हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, राइट? बट यस, अगर आप उसको होलिस्टिकली देखते हैं या ओवरऑल देखते हैं तो ऑल ऑफ दीज आर they need our attention, they need solution. और अभी जो हुआ है physical, it was very tragic. Very tragic. Harpeet ji? हाँ जी, हमारा जी ने जिस तरह किया वा भी it is actually domestic violence ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ word use ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ physical violence ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕੁੱਟਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਿਊਸ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਵੀ ਸਟਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਮੋਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੀਪਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਲਚਰਲੀ ਸਮਟਾਈਮਸ women are being abused more if you look at the stats. So I think ਕਈ ਵਾਰੀ culture play role ਕਰਦਾ। we live in extended families, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ role play ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ladies sometimes they are dependent on the other person, codependent ne, independent ne, financial reason. There's so many reasons that people are tolerating. Even some of them are aware that this is wrong, they shouldn't be, but unna nu koi nikal da rasta nahi dasta. So I think kai vari support system nahi around hunda. So I think domestic violence nu it's like they should consider as ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ mental health ਤੇ physical health ਤੇ healthy relationships ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ aware ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜਲਾਲ ਭਾਈ, just wanting to add one thing on what she said, like and I just wanted to make it very clear actually कि जो misconception है around domestic violence के ये एक खास स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी के लोगों के साथ ही होता है या लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों के साथ या पढ़े लिखे लोगों के साथ या सर्टन कल्चर्स या रिलीजन में, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू UN। लाइक ये एक वर्ल्ड हेल्थ क्राइसिस है, राइट? तो ये अपर स्ट्रैटा में भी उतना ही कॉमन है जितना ये लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में है। तो हर जेंडर में है। अगेन होता ये कि रिपोर्ट कितना किया जाता है, दैट्स अनदर थिंग, राइट? And as she said, in some cultures, because I would not say that we've normalized it, I would not take it that way, but yes, there's certain again we're going to talk about it, mental models that does or they actually perpetuate this. But again, it's all across the same. If you look at Calgary's heat map in 2023, हर quadrant में है ये, right? So that means that हम इसको categorize नहीं कर सकते। Let's not only one community. Yeah. तो चलो जो अपने educated नहीं है, so they might have excuse, लेकिन जो educated लोग हैं still the cases are going up. I'm sure अभी जैसे तुमने कहा there are educated people, they are going through the same thing. तो फिर I'm sure that there are more women are अपना on a hotspot or like on a bad situation than men. तो educated people समझते क्यों नहीं? What do you think? Like क्यों वो नहीं, या तो जो educated people या तो वो समझते नहीं या तो वो जो समझना चाहते नहीं। ये मैं आपको I'm just going to start off from a very basic level, जलाल भाई, right? So जो मैंने mention किया mental models का, right? तो अगर हम systems change framework देखते हैं तो which I will talk a little bit in detail later as well, उसके सबके bottom पे उसका mental models है, right? Mental models mean कि हम किस तरह दुनिया को देखते हैं, हमारा world view किस तरह का है, and that is influenced by हम जिस family में पैदा हुए हैं, हमारे circumstances around, हम किस circumstances में बड़े हुए हैं, the people who've been around, उनका influence हम पे, all of that and that, और हमारे पास कौन से biases हैं, कुछ biases हमारे implicit हैं, कुछ explicit हैं, जो actually play out करते हैं in our everyday interactions and we don't realize it, but they are there. So we have developed or we have certain mental models around domestic abuse as well. हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बहुत बड़े लिखे लोग भी they do not want to address it, right? कुछ लोग तो इसको because वो कहते हैं कि औरतों का issue है, they do not want to get into this, whereas it's not a women's issue. It has never been, right? But वो उसकी बात नहीं करना चाहते। So all of this actually prevent us not only from talking about it, but also prevent us from
addressing it properly. So we need to start from the very basic by changing the behavior patterns, by changing the mental models that are perpetuating these issues or these. I always call it like these are wicked problems. इनका कोई easy solution नहीं है, इनका कोई एक cause नहीं है, right? तो इनको address करने के लिए भी हमको holistically wrap around approach या हर तरफ से आना पड़ेगा to see why this is even happening. So education आपको degree दिला देती है, but education can only change your mental models if you're ready to do that and unlearn those behaviors. If you don't want to unlearn those behaviors, then nobody can change you. हाँ जी बिल्कुल हमारा ने जैसे कहा कि I will add more on to that. The same thing, it's like what you have seen growing up, it just becomes normal to you. That's how you think कि वो normally behavior है, so they don't know that this is wrong or this is right. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ I think step 1 ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ right now ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, right? So it's impacting them. So we're also just raising those young generations. Who are they going to become, right? So I think it's important to be aware of ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ community ਦੇ ਵਿੱਚ awareness ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ help ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਏ, ਸਪੋਰਟ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈਏ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਤੋਂ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, everybody should support that. ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ. That's like instead of saying that, I think we should get support as much as we can. So you know अभी जैसे हमारी जो स्पेशल जो है साउथ एशियन कम्युनिटी है, I think like we work like जो most of the people they work 2 jobs. हाँ जी. तो उनके लिए बच्चों का टाइम नहीं होता, बच्चों को कोई अपना एक्टिविटी होती है तो ऑफ कोर्स जो है मदर लेके जाती है या तो कुछ भी होता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन क्या है. अभी तो जब भी कोई लड़का या लड़की अगर उसको पेरेंट्स का इफ दे आर नॉट देयर फ्रेंड, आई थिंक जब जो वो टाइम आ गया कि जो है पेरेंट्स नहीं बल्कि दे आर फ्रेंड्स ऑफ देयर किड्स. आई थिंक दैट विल हेल्प टू सॉल्व लिटिल बिट. इसलिए कि हम तो यहाँ आ गए, हम तो बड़े हो गए, सो नाउ वांट टू मेक श्योर कि जो हमारे साथ हुआ तो इट डजंट कंटिन्यू विद आवर किड्स, राइट? अभी हमने जो है रिसेंटली मूवी एनिमल, उसके रणबीर कपूर की, उसको बाप का प्यार नहीं मिला, द वे ही टर्न्ड आउट वेरी वायलेंट, राइट? तो आई थिंक लाइक जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, तो आई थिंक अभी ये टाइम आ गया है कि यू वर्क 2 jobs or 3 jobs or 1 job. आई थिंक someone has to be there with the kid as a friend. अगर उनकी कोई एक्टिविटी है या तो कोई गेम है, they have to be there ताकि उनको वो फील जैसा हो कि ये like you know it's like a family event, it's not my own event. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਲਾਲ ਜੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ. ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦ ਕਿਡਸ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਆਪਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, it's okay, move on, friend ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, instead of listening to them and instead of listening to them emotionally what they're going through, validating their feelings. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ them emotionally available to them so they can come and talk to them and you support them. If they make a mistake, you support them, that's okay, we will learn from a mistake instead of disciplining them in a strict way or all those things. So I think that's also important. I just want to add on to that, Jalal bhai, that parents hum keh to rahe hain yahan pe, but actually do parents have that support
available in Canada, even for themselves as well, right? तो जो पूरा जो integration का जो settlement का journey है, it does take toll on your mental, physical being, right? And sometimes parents are doing, especially racialized people, they are doing more than one job just to put food on the table. And so you cannot expect from those parents कि वो फिर आके लोग बच्चों के साथ, so वही जैसे it's a very famous saying कि it takes a village to raise a child, and unfortunately we've lost our village, we've lost our community when we come to Canada, so there's a lot of trauma that we come with to this country, right? और and it's huge, और उसकी वजह से हम obviously we are not emotionally, we're not available to our kids, but other than that क्या हमारे पास वो tools हैं to parent them the way they should be, because now parenting has changed, the way we were raised, now kids are different, it's all technology, it's a lot of technology, iPads and devices है, how do you navigate that? फिर बच्चों को अगर हम कुछ घर से उनको नहीं भी समझ आ रहा है, लाइक अगर पेरेंट्स आर ओके, कोई वायलेंस घर नहीं देख रहे, बट मीडिया जैसा भी आपने एनिमल मूवी की बात की, इट्स अ डिस्गस्टिंग मूवी, आई हैव नॉट इवन वॉच्ड इट, बट आई हैव रेड द रिव्यूज, सो द लैंग्वेज, द मिसोजिनी, ऑल ऑफ दैट, इफ किड्स आर गोना वॉच इट, दे गोना लर्न इट, एंड देन दे विल, बिकॉज फॉर देम हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसको हम बोलते हैं ना, हम उसको प्रमोट करते हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ मीडिया, दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स, और वो लड़के फिर वही सीख के एंड दे फील के औरत को कंट्रोल करके या वायलेंट होके, दिस इज व्हाट इट इज, they become men, they become men when they exhibit such violent behaviors. उसको चेंज करना है, और उसके लिए अगेन वही बात है कि आप स्कूल, अगेन we have to start from the very basics, presentations on healthy relationships in schools, पेरेंट्स के लिए सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए. आई नो इट्स लॉट टू डू, but at the community level, we are working on empowering like natural supports, because a lot of immigrants, majority of immigrants do not seek professional help. They trust people around them, their friends, their faith leaders. उनको empower करना या उनकी capacity build करना, I think it's really important if you want to address issues like this one, right? तो कहना आसान है कि parents of course, yeah, no doubt. The situation that parents are in, it's not easy. नहीं, I know, because अभी इतनी महंगाई भी हो गई है. If someone is two jobs, of course, so that person has to work two jobs. And when they come home tired and and honestly, Jalal bhai, like there is no, and I say this because there is not a single issue ना, एक अकेले आप कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं देख सकते, मेंटल हेल्थ आइसोलेशन में नहीं देख सकते, डोमेस्टिक वायलेंस आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, ये सारे इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और समटाइम्स ये सिम्टम हो सकते हैं फॉर द बिगर प्रॉब्लम्स दैट आर causing them, that could be unemployment, that could be mental health, that could be financial issues, that could be intergenerational, we don't know, right? तो आप सिर्फ हम उसको आइसोलेशन में नहीं दे सकते, because none of us live single issue lives, right? So we need to, again I say this, कि हम लोगों को इसको systems change lens के साथ देखना पड़ेगा to तो हम कितना change करें system? What do we do? Again, this is what I'm saying, कि आप mental model से start करते हैं, then there is we talk about relationships, power dynamics, right? कि जहाँ पे लोग किसकी faith places hold a huge significance when it comes to influencing people. If it's coming from faith leaders, if they make it a point that they have to discuss it every time people are there, people will listen, right? इसी तरह जो resource flow है, जो हमारी जब आपको funding आ रही है या जो resources allocate हो रहे हैं, intervention की तरफ कितने जा रहे हैं, prevention की तरफ कितने जा रहे हैं, unfortunately इस वक्त heavily intervention की तरफ है और prevention की तरफ नहीं है. So unless prevention की तरफ resource flow नहीं आएगा, we won't be able to change these behavior patterns or these embedded beliefs, right? That perpetuate those. So we need to address it that way. Again, policy changes are needed as well. मैं back home की नहीं बात कर रही, मैं सिर्फ Canadian context में ही बात कर रही हूँ. Immigration policies में बहुत चीजें change होने वाली हैं, बहुत other policies में change होने वाली हैं. The way we are providing like services to the people, that needs to be changed as well. So yeah, a lot of things. हाँ जी बिल्कुल, हमारा ने बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਥ ਲੀਡਰਸ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ. ਆਈ ਥਿੰਕ those places need to step up.
they need to provide those type of seminars कि you know किद्दां दा होना चाहिए बच्चों ਲਈ seminar provide करने चाहिए females ਲਈ even males are some males are suffering from domestic violence too so I think it's very important especially ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ focus ਕਰਦੇ ਹਾਂ I think this awareness needs to come from those places because ਆਪਣੀ community ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ listen ਕਰਦੇ ਆ then ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ every Sunday every 2 weeks or 4 weeks there's so many services are available which they can go and provide free services free education to the children to youth anybody adults so I think ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ awareness ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ then it's important to kind of move forward कि हाँ नहीं भी आज ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ this is not the way and then ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ then we have to provide them all the resources where they can reach out and get help that's also very important और जो recently जो केस हम जो बात कर रहे थे पहले जो 2 हफ्ते के अपना पहले जो केस हुआ था तो उसके लिए जो है अब I think अपना जो होल्ड ऑर्डर्स भी थे और तो अरेस्ट वारंट भी इशू हुआ था सेम मॉर्निंग और फिर 3 बच्चे हैं लाइक मार नहीं रही और बाप भी गया तो अभी बच्चों को क्या होगा it's very sad and this is an extreme situation and imagine every day what people go through right it's really hard that when people are suffering right that's right you are listening to Salaam Namaste Calgary on Sanjha Radio 94.7 FM मेरा नाम जलाल लाडक है मेरे साथ है हुमैरा फलक and Harpeet and yes we are talking about domestic violence और now we're going to talk about कि क्या क्या सर्विस अवेलेबल है कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स इसको हम किस तरह अवेयरनेस दैट्स द मेन थिंग वी नीड अवेयरनेस ऑन अ कम्युनिटी लेवल जो और प्लस ऑन जो है अपना ऑन अ फैमिली लेवल इज वेल कि सबको पता हो ऐसा हो रहा है तो फिर तो हमें क्या करना चाहिए सो विल टेक वेरी स्मॉल कमर्शियल ब्रेक एंड विल बी राइट बैक ਕਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ Facebook ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਾਲ ਫॉर ਸੇਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰ 403 607 ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ 4 ਰੁਪਏ ਮੋਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ Thank you so much everyone for watching and hopefully you are enjoying it comments you can put a comments please do so that will be very very helpful if you have any question you can write the comment and I'll ask them ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰਪੈਟ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰ ਟਾਇਲਸ ਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਟੀ ਕਾਰਪੈਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੇਂਜ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੇਟਾਂ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਸਿਟੀ ਕਾਰਪੈਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ 8000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਾਰਪੈਟ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਟਾਇਲਸ ਲੈਮੀਨੇਟ ਤੇ Indian hardwood flooring की बड़ी collection है। You know this recording is सिटी कार्पेट वाले इंस्टॉलेशन का काम बहुत ही कंफर्टेबल तरीके ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕਾਰਪੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ 3405 32 ਨੌਰਥ ਕੈਲਗਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 403 291 1114 ਸਿਟੀ ਕਾਰਪੇਟ ਐਂਡ ਫਲੋਰਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ RESP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403 404 3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬੜੇ ਸੋਚ
ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਘਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣੇ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਨੋਟ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4036182112 ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਿਟਰ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜੀ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪ੍ਰੈਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4036182112 ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ ਲੈ ਦੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 4036074208 ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ 4036074208 ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ जी वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन Sanjha Radio 94.7 FM जिसको स्पॉन्सर किया वन ऑफ माय गुड फ्रेंड रियल्टर आसिम नवी इनका कहना है इफ यू बाइंग और सेलिंग कॉल रियल्टर आसिम नवी इनका फ़ोन नंबर है 4034042746 4034042746 आपको जैसे पता है कि अभी ये जो फरवरी आ रहा है और जो फरवरी में होता है वैलेंटाइंस डे तो इसका एक इवेंट होने जा रहा है प्रेजेंट बाय मी यस आपका जो है अपना आपका खादिम जलाल माई सेल्फ तो 17 जो अपना जो 17 तारीख को सैटरडे को एट जो फहद रेस्टोरेंट एट 7 PM it's with a dinner music party and there are some जो है fun games as well including अंताक्षरी best bathroom singer और some वहाँ पे जो है अपना रेफर ड्रॉज भी होंगे और प्लस जो बेस्ट ड्रेस्ड कपल एज वेल और स्पॉन्सर्ड बाय जो है रियल्टर वजहत फिरोज बुरहान खान भाई सुपरवाइजर इंश्योरेंस बाय हरप्रीत सिद्धू वॉच वेयरहाउस एंड ऑफ कोर्स मैमस्टर्स फ्यूजन बॉलीवुड एंड सांझा रेडियो इज द मीडिया पार्टनर मैरी जी जो अपना फोटोग्राफी and Nawaz Walji will be on the sound and myself will be there और जो singers हैं सागर आचार्य Nikita Mehta and Sangeeta Melody so hopefully you guys can join it's about 4 to 5 tables left hopefully you can get the table you can call me at 587-899-4786 आज का जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पर हम वैलेंटाइन के शो के अपने के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसमें प्यार है मोहब्बत है और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जिस जो डोमेस्टिक वायलेंस जो चलता रहता है कैलगरी में और अराउंड द वर्ल्ड और हमें जो है सज्जद भाई का जो अभी मुझे मैसेज है सज्जाद मिर्जा साहब जो कि PCHS से ही है सो ही इज़ वाचिंग एंड लिसनिंग एज वेल एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग PCHS मेंबर यस थैंक यू मेरे साथ हुमैरा है हुमैरा फलक एंड हरप्रीत हंस फ्रॉम द PCHS हुमैरा जी सिंस पैंडेमिक जो कि पूरी दुनिया को चेंज कर दिया नॉर्मल लाइफ हमारी जो थी वो सब चेंज हो गई हम क्या करते थे अभी हम क्या करते हैं इट्स चेंज अ बिट आई थिंक वो उस वक्त से जो है लोगों ने जो है अपना घर से काम करना शुरू कर दिया था एक वन ऑफ द रीज़न जो है अपना डोमेस्टिक वायलेंस एट होम वो उसके नंबर ज़्यादा आने लगे फ़ोन कॉल जो है पुलिस ज़्यादा आने और जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके फ़ोन कॉल ज़्यादा आने लगे प्लस वन ऑफ द एक और इसका मेजर रीज़न है आई थिंक वो है ड्रग्स अल्कोहल और उसके भी numbers are up. A lot of people are drinking or weed, smoking. Of course, smoking is well one of the drug. तो I think one of the reason as well कि आप अगर कुछ पीते हो या तो आप कोई ड्रग लेते हो ओवरडोज से काफ़ी लोग जो हमारे हुए जाते स्पेशली BC में देर जो है record number people are dying. तो you are drinking then plus you go and और फिर आप जो है दूसरी तरफ you अपना पूरा हंगामा घर में जो है खड़ा कर देते हो. So of course these two are related. अगर आप दूसरे जो कॉज देखें फाइनेंशियल भी इमोशनल भी है मेंटल भी है सारे इश्यूज जो है कंबाइन ऑल टुगेदर ड्रग्स एज वेल अल्कोहल है फिर बट जो है इसका जो एंड होता है वो होता है फिजिकल एवरीथिंग जो कम्स डाउन टू फिजिकल जो फिर अपना देन वी जस्ट सॉ द वन ऑफ द फीमेल लॉस्ट हर लाइफ
तो हम क्या करें इसके बारे में? How can we control drugs? No, again, वो आपने बिल्कुल सही बात की और as you said कि all of these issues are inextricably linked as well at some point or the other. Substance abuse is definitely it's a growing concern and जो Harpeeet कह रही थी especially in our community और हम लोगों ने देखा है पिछले 1 साल के अंदर कि हमारी खुद की South Asian community में बहुत deaths हुई हैं और deaths हुई हैं overdoses की वजह से, right? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अगर इस बच्चे या जो भी इस्तेमाल करें कि कितना सेफ है टू यूज इट और कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि अगेन सपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो पीपल आर falling through the cracks because of that. Also because taboo, there's a lot of stigma around it, so even if people want to use it in a safe way, they are not using it that way as well. So again, it all comes back to how your community supports you, और community तभी support कर सकती है जब community खुद aware हो या empowered हो to guide people, and that's why a lot of emphasis of my work now is how should we build civic infrastructure, right? कि जब आप एक घर सिटी बना रहे हैं तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना, कहाँ पे रोड्स हैं, कहाँ पे ट्रेन स्टेशन होने चाहिए लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उसी तरह सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे लोगों के पास इतनी अवेयरनेस और नॉलेज होना चाहिए अराउंड दीज इश्यूज़ कि अगर इश्यूज़ आकर हो रहे हैं तो उनको किस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है इफेक्टिवली, एंड वेयर शुड दे रिफर दोज पीपल सो दैट दोज पीपल डू नॉट सफ़र और डाई और खुदा ना खास्ते एक्सट्रीम सिनेरियो में ना पहुँचे। तो उसके लिए अगैन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक PCHs या जो ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, दे डू अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस। अब तो हम लोग बहुत एक्टिवली एडवोकेट कर रहे हैं इन कल्चरली अप्रोप्रिएट सर्विसेज पे, लैंग्वेजेस पे, तो अब तो वो भी इशू नहीं इतना है लोगों को, क्योंकि अब अपनी लैंग्वेज में आके you can do that or you can attend those workshops and trainings. That is very important also, right? Also हमारा again research support करती है कि help seeking behavior generally immigrants के अंदर regarding mental health हो गया, domestic violence है, substance abuse, it's very low. And again, it's low for a lot of reasons, but stigma is huge because if you would want to talk about it, people would start judging you on that. और अब ये बात hidden है, we all know that कि stigma बहुत part play करता है in lot of things that are happening, and of course towards our failure to address those issues because people don't want to talk about it now. So unless हम लोग वो again community का infrastructure ऐसे build करें, community ऐसी supportive हो कि people don't feel judged even if their kids are going through this or they themselves are going through this, and then they are provided help at that very point when they need it, I think that will go a long way. बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਜਨਰਲੀ ਬਟ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਆਗਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਨਾਰਮਲ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਇਟ ਜਸਟ ਬਿਕਮਸ ਪੀਪਲ ਜਦੋਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Same goes with the drugs, right? Person, there's also mental health related to it कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ related ਆ। So I think ਉਹ recognize ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ support ਲੈਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ stigma ਬਹੁਤ ਹੈ, support ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ we don't want to go out and get the support ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ especially as a male being a strong person they think they can control it, they will do it, they will fix it. But actually it's one of the biggest strength if you go ask for help or get help. It's actually being vulnerable. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫॉर ਯੂਰ ਬੈਟਰਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ PCHS ਦੇ ਵਿੱਚ even ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ it's everything is kept confidential. Counseling services free of cost. All you just have to call them, book an appointment with the counselor. They understand the culture. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ services provide ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ share ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Everything will be kept confidential. As a couple, if the wife wants to support it, they can go together as well. There's a relapse program as well. There's also anger management, which is also related to all the domestic violence and substance abuse. So there's also anger management program. So I think it's just you have to start a journey for your own improvement of your physical and mental health.
and which will improve everything. ਜਿਵੇਂ healthy relationship. So first point that he be being aware ਤੇ knowledge ਲੈਣੀ. I would also say ਕਿ especially females ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ culture ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ help ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, they just keep suffering or even they're just struggling. So ਉਹ ਵੀ PCHS help provide ਕਰਦੇ services in a group support ਹੁੰਦੀ ਹੈ, women growth circle ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ more aware ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, you know, how to empower themselves. So it's every in their own convenience of their home, 5 to 6 every Tuesday class ਹੁੰਦੀ ਹੈ, they can join it. I conduct that class. There's a mental health group ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ awareness ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ, you know, like there's, if I'm not feeling right ਜਾਂ anxiety ਹੁੰਦੀ ਆ, you know, like stress it can lead to depression and bigger mental health problems. So I think early signs ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ catch ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ awareness ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, it's much better. So ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ I think approach ਕਰਨੀ ਤੇ being aware. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ, please give them information so they can come and seek help. One more thing is exactly ये तो जो लोग people who are going through that, right? But then what about people who are not, but then they know a lot of people who go through that, and you know those people trust them and they disclose you know what they're going through. मेरा बहुत ज़्यादा हमारा focus is to on those people as well, जिसको मैं आप कह रही हूँ natural supports. Natural supports service delivery नहीं करेंगे, service provide नहीं करेंगे, but they're very important along the continuum of service delivery, because this is like the first responders. लोग आपको आके कहेंगे जलाल भाई I trust you, I'm going through this. Then the words that you would use at that point can either break them or make them, right? So अगर आप उनको कहें नहीं तुम्हारा वहम है, तुम्हें डिप्रेशन तो नहीं है, you're just making it up, और तुम exaggerate कर रही हो, अगर वो कह रहे कि मुझे मेरा पार्टनर कुछ करा नहीं, और like नहीं नहीं, you know, तुम ही कुछ करती हो कि उसको गुस्सा आ जाता है, you know. So the words that you say and how you say that and where you refer them or how you respond, that is very important. So natural supports को empower करना, उनकी capacity building करना बहुत ज़रूरी है. In communities, faith leaders की capacity building करना बहुत ज़रूरी है, community leaders की बहुत ज़रूरी है. So yes, so that is along with the services, I think that will help. That's for sure. It's your own. You have to build a support system around you, who you can trust. कई बारी अपनी community च हुंदा भी जिवें ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਜਾ ਕੇ, right? So they feel embarrassed and shamed, right? So I think it's important that you should have connect with people. It doesn't have to be always family. It can be friend. You can meet new people, especially ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ groups ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ group service provide, ਉੱਥੇ you can make friends ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ support emotionally ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ feelings validate ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, like they understand you, they have empathy for you, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ point ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ understand ਕਰਨ, then they guide you, or sometimes you just need somebody to listen to you. That's all you need, right? ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, PCHS ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਅਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਫ ਦੇ ਕਾਲ them, you know, I need this person, they will get the good match, either a young person or a middle-aged person, then they can just go and just talk about things. And I encounter a lot of our participants that they don't have anybody to talk to. So I think that having that support system, it just makes you mentally strong. That's true. To deal with things. So as of जो है 2022 पे जो है one of the stat कि one out of 4 women and 1 out of 7 men goes through the domestic violence. मेरा एक जो है कमेंट है कि आपकी आवाज़ नहीं आई, थोड़ी आप आइए if you don't mind. तो you know आजकल जो बहुत से नए लोग आ रहे हैं कैलगरी में, तो अपना विद इन कैनेडा जो है टोरंटो से, अपना ओंटारियो से या तो BC से यहाँ आ रहे हैं, but there are so many new people are coming from the South Asian country as well, especially Pakistan, India, Bangladesh. And I'm sure like you know what जो हम स्टोरी सुनते हैं, there are new people are इसलिए कि हम जैसे यहाँ पे नहीं आते हैं हस्बैंड या वाइफ के साथ, हमें जो शर्म बहुत आती है बोलने के लिए, हमारा ग्रुप सर्कल कोई नहीं होता. I think I saw one of the comment today on one of the group जो है अपना जो है community group कि we are new to Calgary, we want to make some new friends. I think this is really good. Yes. आप I think जो है सबको ऐसा ही होना चाहिए कि आप जो आपके जो ग्रुप पेजेस हैं ज्वाइन हो जाएं, then at least then आप जो है लोगों को जानना शुरू कर देते, पहचानना शुरू कर देते. That's how you make new friends. अगर आप नए हैं, and if you have an issue, there are, it's like I'm sure सारी communities they have their own services. You can contact anyone. अगर कुछ भी start होता है, you know at least you have information ready. अगर it get worse, अगर आपके बच्चे भी हैं, that's even worse. आपके बच्चे हैं
Am I right? Yeah, no, और बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. This is how you build network. Yeah, जो मैं civic exactly. infrastructure की बात कर रही थी. But also, Jalal bhai, like we are, whoever are claim to be leaders, या community leaders, या faith leaders, they also need to be extremely cognizant that people are reaching out to you. They are trusting you with some issues That's right. that are very confidential and that is serious, right? Yeah, yeah. So अगर तो उनके अंदर capacity नहीं है to deal with those, then they should refer them to the right people. There are Yeah. organizations like PCHS, like Fear is not. There are a lot of organizations, Yeah. CMHA, और भी बहुत है. नाम, AHS, या वो yeah. या आप कहीं पे भी उनको कर दें. Instead of just guiding them not in the right way, right? Yes, yes. तो वो बहुत important, जैसे मैंने पहले कहा कि natural supports को अब बहुत responsibility जो huge rely करती है ना, वो natural supports पे है. How they are directing people or where they are referring over. एक बात मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगी कि because we are talking specifically on domestic violence, that we need men as our allies in this work. Because Yes. as I said in the very beginning, it's Yeah. not women's issue. Yes. It's never been a women issue. Yeah. जो जहाँ से जो perpetrators हैं, basically उनका issue है. And you're right, men are going through that as well, Yeah. 1 to 7. Unfortunately, हमारे पास victim के लिए तो फिर भी थोड़ी intervention और वो services हैं, but जो perpetrator है हमारे पास उसके लिए services नहीं है to support what he's going through or what she's Yeah. going through at that time. उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ये जो अभी जो केस हुआ है खास Yes, तौर पे, it's yes. reflective of that, Yeah. that our services do not support Do not support. perpetrators. Like उनके लिए जो उनको इस वक्त mental health की support चाहिए या जो भी है, that's not available. Victims के लिए भी नहीं है. It's very very temporary, it's very transactional. और ये again it's reflective of the system कि हमारा जो system है, जो shelters है या हमारा जो justice system है, ये it's not providing transformational services to the people who are going through domestic violence. And when I say transformational, meaning कि आप एक तो victim को empower नहीं कर रहे, victim को वो support नहीं दे रहे जिससे वो reintegrate back कर सकते हैं community में safely and securely and independently. And then perpetrator को आप वो support नहीं दे रहे जिससे वो मतलब to break this cycle of violence where he can get over that. वो lack कर रहा है 100%, Yes, right? yes. दूसरा, it never comes from men. Like it's very rare that you are doing this. I've never seen any faith leaders, as I said, talking about it. I've not seen a lot of male politicians talking about it. I've only seen women talking about domestic violence. Shelters के CEOs भी ज़्यादा women हैं. Yeah. Like advocates भी ज़्यादा women. And I know because it's very personal for us as well. But men as allies भी चाहिए. Or again, as research supports, that usually men condemn violence. They are That's not right. in favor of violence. Yes. But they need to come forward and actively, condemn it on public forums, in Yeah. meetings, in events. Yeah. जैसे आप Valentine का कर रहे हैं, तो Yes. उसमें कहिएगा. Yes. Harpeet Yeah, ji? yeah, same thing. I would totally agree. If like men take the charge and then talk about these issues, and then other people would listen, right? So that's also very important. Then people will listen. Either it's a faith leaders, जो भी है community में, I think वो ज़रूरी है. So I think that coming back, I think for me the best step is to start from your own within. Yes. I think ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, and everybody should, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ go through ਹੋ ਰਹੇ, but be a support system, make a change in the system. ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ support, ਜਿੰਨੀ ਵੀ awareness ਹੈਗੀ ਆ, you should spread the awareness. ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ awareness ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ yes. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Yeah. ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ youth ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਫਰੋਮ ਦ ਯੰਗ ਏਜ. ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਝਿੜਕਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, what's right, what's wrong. So they're very sensitive. So we have to handle them sensitively too. Yeah. So I think it's very important, and it just caused them such a big trauma when they see any type of domestic violence in a family. So I think it starts from each person helping the other person, being aware, and communities de vich jana. I think that's more important. Yeah. So I think it was just in the news the other day. आजकल जो सेल फोन्स हैं अपने अपना हर कोई बच्चे के पास है, यंगस्टर्स हो, और उस पर सोशल मीडिया से काफ़ी लोग जो सीखते हैं, टेक्नोलॉजी भी है. कुछ अपना यू वॉच सम मूवी ट्रेलर्स के, कोई अपना किसी ने अपना क्लिप डाल दिया वीडियो का, मूवी का, देन यू लर्न लॉट ऑफ बैड थिंग एज वेल. तो वो बात करते हैं हम ये बच्चों को फ़ोन देना ज़रूरी है.
अगर हम बच्चों को फ़ोन देते हैं तो बट डू दे नीड ए फेसबुक और डू दे नीड इंस्टाग्राम? वो ज़रूरी या तो जो है अपना स्नैपचैट डू दे नीड दिस? खाली हम लाइक ऑफ कोर्स अगर आप ग्रेड 8-9 में जाते हैं आई थिंक यू नीड ए फ़ोन, कभी कोई इमरजेंसी हो गई यू कैन डायल द नंबर योर पेरेंट्स और 911 के जो भी है, बट डू वी नीड दोज एप्स ऑन द फोन? अगर हैं तो उसको डिलीट कर दें? इज दैट बी हेल्पफुल और नॉट? I think again it's a very tricky question और आजकल के ज़माने में like because for them for आजकल के kids के लिए it's like a basic necessity ना, वो इतना peer pressure है, how अगर आप कर देंगे तो उसका reaction भी एक आएगा right, but इसका मतलब ये नहीं है कि parental control होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, parents को टाइम लिमिट करना चाहिए 100%, वो ज़रूर होना चाहिए, चेक करना चाहिए ऑन एंड ऑफ के बच्चे क्या देख रहे हैं। बहुत केसेस में तो ये ना कि वो अनअटेंडेड स्क्रीन टाइम है, टाइम का नहीं पता और ये नहीं पता किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स को कई दफ़ा तो खुद पता ही नहीं है ना, बिकॉज दे आर नॉट दैट टेक savvy, तो उन बेचारों को तो खुद ही नहीं पता कि बच्चे क्या मुझे बहुत से ऐप्स का नहीं पता और हमारे बच्चों को उनका पता है राइट, उनका पता है सो वो एक बड़ा वो है, लेकिन यस पेरेंटल आई थिंक दैट्स ह्यूज, करना चाहिए जितना आप उसके ऊपर आप यू कैन which is not happening unfortunately, क्योंकि it's like an addiction too, अगर आप बच्चे से लेंगे तो देखिएगा the way they react, it's like जब सब withdrawal symptom होता है ना, they would go violent, so definitely it is having impact, negatively impacting kids, but again it's a reality for them as well, maybe it's more important for them खाने पीने से ज़्यादा it's their devices right, but how do you again navigate it, इसके लिए support होना चाहिए कि बच्चों को आप एक्टिविटीज़ में डालें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जस्ट टेक दैट टाइम जितना आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक टाइम लिमिट करें कि आप ये ये आपका स्क्रीन टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं है। देन एज अ पेरेंट आई थिंक I don't want to comment on that, but I'm a parent and I struggle with that as well. But you need to put the foot down at some point. You have to put the foot down. Yeah, again, same thing. You have to set up boundaries, right? Every parent have their own way of parenting their child, right? So I think what works for them, great. What doesn't work for them, then you have to set up some boundaries, and it's age appropriate boundaries. That's also very important. And ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ extra curriculum activities ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਵੇ, but it is unfortunate that we in this day and age it's hard to take away the phones from the kids, but I think you can, if you give the right reasoning to the kid ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, limit the use of limit the use of which apps age appropriate they can use, what they can't use. I think that's more important. इसमें मैं थोड़ा सा एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी, and correct me if I'm wrong, Harpeet, I don't see a lot of activities happening for kids in South Asian community. No. फिर भी एज एडल्ट जैसे वैलेंटाइन डे कर रहे हैं या आई एम सॉरी बट मैं मतलब आई वांट टू से कि हम लोग फिर भी आपस के लिए एडल्ट्स हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, सोशल मीटअप्स है, कोई इवेंट्स है, न्यू ईयर हो गया, बट हम स्पेसिफिकली यूथ के लिए या बच्चों के लिए कोई टेलर्ड इवेंट्स नहीं करते जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो। बच्चों को चांद रात के बाजार में या न्यू ईयर के इवेंट में जहाँ पे एडल्ट्स की बॉलीवुड सिंगिंग एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें हमारे बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो वी नीड टू कम अप विद इनोवेटिव वेज कि हमारे बच्चे उसमें इंगेज हों और इन्वॉल्व और उनका इंटरेस्ट हो। वी डू नॉट provide them with leadership opportunities कि हमारे बच्चे हमारे events lead करें, right? We should step aside and give them that responsibility of doing that, and they will do it once you start trusting them with that or creating those opportunities. I think ये करना जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आखिरी चीज़ before I forget, जो हम everyday conversations है ना जलाल भाई, sometimes that also reinforce or perpetuate, again I say this word again and again, such issues, क्योंकि जब हम jokes ऐसे jokes हैं जो sexist jokes हैं या misogynist हैं, आप वो उनको आप नहीं discourage करते, even when men are sitting or women are sitting together, हम husband का मजाक उड़ा रहे हैं या बीवियों का मजाक उड़ा रहे हैं या हम गालियाँ वो दे रहे हैं जिसमें हम आपको पता है कि वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं unconsciously in mental models को reinforce करते हैं, and that doesn't help. So we need to change all of that. And I agree with Humaira with the with the kids, जैसे model change करना या बच्चों को events, I think that's very important.
I think we usually don't see it. Yes, You know, Diwali event आ गया, so सारे जैसे New Year का आ गया, जी, जी. youth का भी I think it's important that people should take the initiative, or youth should take the initiative. Exactly. Like, you know, the youth over 18 or something, they can take the advantage of it. But then somehow it has to come as a you know, somebody has to take the initiative Yes. to start it, and then it goes. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ event ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, I just want to share here Yeah. कि PCHS Yes. D3 event कर रहा है. What is it, D3? D3 means Dil. Let me just read Dil, it. dinner and dance. Dinner and dance. Okay. That's on March 2nd at 6 p.m. at Empire Banquet Hall. Mhm. Actually, they're raising funds for the youth youth education. So we are providing services to the youth generation. Mhm. So we're raising funds for the youth. I would request all of our communities to, you know, to support that event. It's a 125 tickets. You can call PCHS to get the tickets. Mhm. The number is 587-999-9312, or you can go online on the website of PCHS and get the tickets as well. Again, for any PCHS services, if you're struggling with mental health, domestic violence, you know, and drug or substance abuse, please feel free to call PCHS 587-999-9312. So we offer services open, and then we will call you back. So this even individual counseling, couple counseling, people should reach out. Yeah. So we are live on the 94.7 FM as well as like on Sanjha Radio, and we are live on Facebook as well. So I just want to name few, the one who watched a little bit, or they are still watching. Ian Elder. Okay, so Rajnish Sharma, Muzna Amin, Umaid, Amber Qureshi, Salima Jumma, Zubia Khanam, Amir Lakhani, Zara, Pratiksha, Nimmat, Mariam, Salim Zoga, Aftab Ali, Humaira Falak. Oh, you're watching too? Okay. Meena Sundarji, Shri Kanta, जो हमारे Nepalese जो है जो हमारी community से हैं, Nabi Zada, Nurdin Badruddin, Manpreet Kaur, Salma Jadhav, जी Salma जी, we miss you. Mina Jamila Sani from LA, Dr. Navi Sayyed, he's watching as well. Dr. Saab, thank you so much. And Nina Raj. So domestic violence अभी जैसे हमने शुरू में कहा था कि वो सालों से चलता आ रहा है और ये सालों तक चलेगा, वो ख़त्म तो बिल्कुल नहीं होगा, but we need to do our part कि उसकी जो है awareness कि अगर कोई if someone is going through जो any kind of जो है violence, so please contact जो हमारे जो पुलिस जो हमें गवर्नमेंट के जो अपने एजेंसीज हैं, या तो कैलगरी पुलिस है या तो PCH, जैसे there are so many other organizations who can help you. Yeah, refer them to the right resources. Yes. And because it's a wicked problem, it would not have an easy solution. And we need to keep this in mind, that behavior patterns or such issues takes years before we start to change some change. So we need to be patient, but we need to be persistent at the same time. And we need, again, as I said, we need a holistic wrap-around approach, extremely coordinated and collaborative efforts towards addressing such issues. And जहाँ पे service providers important है, वहाँ पे natural supports, आप लोग as community members, you can play a huge role in addressing it and preventing it. So a lot of emphasis should also be on prevention rather than intervention. हाँ जी, last पे तो मैं ही कहना चाहूँगी भी, please I just want to mention कि कोई जना struggle कर रहा है mentally, and then you're at the point that कई बारी अपना दिन दे विच कदे time आ जांदा, then we have a rapid response line as well. So we'll talk to you next week. Thank you so much. Allah Khuda Hafiz, Sat Sri Akal, Adab, and Jali Madad. Thank you so much, Jalal ji, for having us. Thank you. एक घंटा और कर सकते हैं. Oh, I know, you can go on. Yeah, So, is it all from the Facebook? thank you so much, everyone.